Greetings everyone. Scripture of the day, the book of Revelation chapter 3 verses 19 to 22. Jesus is knocking at the door of your heart. Repent and open your heart's door and accept him as your savior. Those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. खुदावंद यसु मसीह में तमाम बहन भाइयों की खिदमत में सलाम। आज की आयात मुकद्दस मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब उसकी 19वीं आयत से 22वीं आयत के आखिर तक। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सबको मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा करो। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।